Hello everyone, welcome to my channel guys. In today's session we will discuss client-side scripting language. Subject code is 22519. Unit 1 Basics of JavaScript Programming. Multiple choice question and answer for your semester examination, all regular examination and competitive examination also. Okay, let's begin the session. First question is very simple. Which of the following is not JavaScript data types? Okay, option A, B, C, D are given here. Just check it out. Correct answer. Correct answer here is option D, float. Okay, float is not JavaScript data types. And at the other hand, following are the JavaScript data types. It's included number, string, boolean, object, and next one is undefined. Okay, they all are the JavaScript data types, but float is not JavaScript data type. Okay, next question. Which company developed JavaScript? Pretty simple question guys. Answer is option A. Netscape is the software company who developed JavaScript language. And JavaScript is a scripting type language. Next question. Inside which HTML element do we put the JavaScript code? Okay, so inside the script means script in angular bracket means tag is the element where we put the JavaScript code in your HTML document file. Next question. Which of the following is correct about feature of JavaScript? Option A, B, C, D are given here and pretty simple question. Some features of JavaScript are follows. Just go through it. First one, JavaScript is a object-based scripting language. Okay. Second feature is giving the user more control over the browser. JavaScript की हेल्प से आप जो वेब पेज क्रिएट करते हैं वो क्या करता है, आपको ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है आपके ब्राउजर पर. ओके, मे बी गूगल, मे बी याहू. नेक्स्ट वन, इट हैंडलिंग डेट्स एंड टाइम मीन्स जावास्क्रिप्ट आपके प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट आपके वेब पेज को डायनेमिक बनाती है एंड हैंडल्स करती है डेट्स एंड टाइम्स को. ओके, नेक्स्ट वन, इट डिटेक्टिंग द यूजर्स, ब्राउजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट कोड को आप अपने HTML वेब पेज के जो आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं उसके कोड में ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को, तो जावास्क्रिप्ट आपके वेब पेज को डायनेमिक तो बनाता ही है, उसके साथ साथ आपका जो पर्टिकुलर ब्राउज़र है जो यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स, उसको डिटेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट वन, इट्स लाइट वेटेड लैंग्वेज. JavaScript is called light-weighted language. Next one, JavaScript is a scripting language and it's not Java. Okay, JavaScript and Java, they both are different kind of languages. Okay, next one, JavaScript is interpreted based scripting language. JavaScript is interpreted based scripting language means जो Java का कोड आप रन करते हैं आप उसको इंटरप्रेटर के थ्रू रन करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स फॉर एग्जांपल कहीं आपने स्मॉल ए यूज किया है एंड कहीं आपने नेक्स्ट एक ही प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के कैपिटल ए इंस्टीड ऑफ स्मॉल ए यूज कर लिया है तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा. ओके, जावास्क्रिप्ट एंड जावा दे बोथ आर केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स अगर आपने स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर यूज किया है तो आप आगे भी स्मॉल लेटर यूज करेंगे, स्मॉल लेटर से ही पर्टिकुलर थिंग डिफाइन करेंगे. एंड अगर आपने कैपिटल लिया है तो आप कैपिटल यूज करेंगे, स्मॉल लिया है तो स्मॉल यूज करेंगे. ओके, सो दे ऑल आर द फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट. नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. जावास्क्रिप्ट इज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ऑप्शन बी इज correct. Next question, choose the correct JavaScript syntax to change the content of the following HTML code. Okay guys, यहाँ पर आपको ABCD कुछ HTML कोड गिवन है. सो इनके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट
करेक्ट सिंटेक्स चूज करना है जावास्क्रिप्ट का। आप ध्यान से देखिए ABCD ऑल ऑप्शंस को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर JavaScript syntax to change the content of the following HTML code। आप ध्यान से देखिए ABCD ऑल ऑप्शंस को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर JavaScript syntax to change the content of the following HTML code। करेक्ट सिंटेक्स हमें यहाँ चूज करना है। सो यहाँ पर करेक्ट सिंटेक्स है ऑप्शन बी, दिस इज document dot get element y id in the bracket, फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट डेवलपर, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। देन जावास्क्रिप्ट डेवलपर इन डबल कोमास एंड इनक्लोज्ड इन parenthesis dot inner HTML in capital letters is equal to your particular sentence. For example, I am a JavaScript developer. Okay. The correct syntax to access the element is, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर करेक्ट सिंटेक्स है document.get element by id। ओके, ये आपको यूज करना है। देन फॉलोड बाय, जैसे मैंने आपको बताया, जावास्क्रिप्ट डेवलपर enclosed in parenthesis within double commas। Here we want to access the content written under that particular id, and id is JavaScript developer। Okay, so we used dot inner HTML code, okay, dot inner HTML, okay, to specify that, and finally we replaced the content with whatever is written inside the codes। For example, यहाँ पर हमने ये जो था JavaScript developer, इसको हमने क्या किया है, रिप्लेस्ड किया है किससे, I am a JavaScript developer से। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct syntax to display JavaScript developer in an alert box using JavaScript? ओके, JavaScript कोड को हम यूज करते हैं HTML फाइल में, मतलब ऐसे सिंपल बात किया जाए तो अलर्ट बॉक्स, कंफर्मेशन बॉक्स, मैसेज बॉक्स शो करने के लिए। सो अलर्ट बॉक्स को शो करने के लिए जो करेक्ट सिंटेक्स है वो है ऑप्शन डी, जस्ट टाइप अलर्ट ALERT and in the parenthesis type your particular message, for example JavaScript developer, and आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग आप जो चाहे वो मैसेज यहाँ टाइप कर सकते हैं। ओके, so here to display any text in the alert box you need to write it as alert followed by parenthesis, and parenthesis within parenthesis आपको अपना टेक्स्ट टाइप करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल lf3.js, यहाँ पर आप abc.js अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जस्ट इन टैग मीन्स एंगुलर ब्रैकेट, आप एंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं, टैग भी बोलते हैं, इट्स अप टू यू, जो भी आप समझ पाए। In angular bracket, just type script then src and is equal to your js.js file name, for example lfc.js। JS stands for JavaScript and it's an extension for saving the JavaScript document। Okay, so here the src term is used to refer to any JavaScript file .javascript। Okay, so option A is correct। Next question, which of the following is not JavaScript frameworks or libraries? Option A Polymer, option B Meteor, option C Cassandra, option D jQuery। Correct answer is option C Cassandra। Cassandra is not JavaScript frameworks or libraries because Cassandra is a distributed database from Apache। Okay, so option C Cassandra is not JavaScript frameworks or libraries। Option C is correct। Next question, why so JavaScript and Java have similar name? Why? Very important question. Here correct answer is option B, JavaScript syntax is loosely based on Java's।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था एक क्वेश्चन में, JavaScript and Java, they both are case sensitive language, but guys Java and JavaScript के कुछ फीचर हैं जो मैच करते हैं, बट काफी सारे फीचर्स हैं जो डिफरेंट हैं Java and JavaScript में. So here correct answer is option B. JavaScript syntax is loosely based on Java's. Okay, and that's why JavaScript and Java have similar name. Next question, what is the original name of JavaScript? Original name of JavaScript is option C, Mocha. The project was originally called Mocha, then renamed to LiveScript, and finally to JavaScript when Netscape and Sun did a license agreement. The idea at the time was to make it a scripting language complementary to Java. Okay, so here correct answer is option C, Mocha. Next question, JavaScript is designed for following purpose. Option A, to style HTML pages. Option B, to execute queries related to database on a server. And option C, to add interactivity to HTML pages. Option D, all of the above. Okay, so guys question पर हम बाद में आते हैं. Here JavaScript is designed for the following purposes. To style HTML pages, yes, JavaScript की हेल्प से आप अपने वेब पेज की स्टाइलिंग कर सकते हैं. So option A is correct. Option B is to execute queries related to database on a server. JavaScript लैंग्वेज की हेल्प से आप अपनी क्वेरीज जो आपके डेटाबेस और सर्वर से रिलेटेड होती हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यस, इट्स ट्रू. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन सी, टू ऐड इंटरएक्टिविटी टू HTML पेजेस. जावास्क्रिप्ट का मेन वर्क यही होता है गाइस. जावास्क्रिप्ट आपके HTML पेजेस को इंटरएक्टिव बनाती है, स्टाइलिंग करती है उसको, एंड डायनेमिक भी बनाती है. ओके, and option D, to add server side scripting operations. Yes, JavaScript की हेल्प से आप अपने वेब पेज में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट हियर. सो ओवरऑल हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. What will be the output of the following JavaScript code? My dear students, आपको as a multiple choice question and answer कोड दिया है एंड कोड की बेसिस पर आपको आउटपुट फाइंड करना है. तो वहाँ पर एक कुछ ना कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली करेक्ट आउटपुट फाइंड कर पाते हैं किसी भी इनपुट का किसी भी लैंग्वेज में. ओके, सो यहाँ पर आप देखिए मेंशन है बेयर स्ट्रिंग 1 is equal to JavaScript. Okay, then mention है where int value is equal to 30. यहाँ पर string value ली है string 1 के नेम से, this is JavaScript. सेकेंड लाइन में int value is equal to 30 दिया है, एक इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू ली है 30. यहाँ पर आपको क्या करना है, अलर्ट दिया है, अलर्ट बॉक्स में string 1 प्लस int value जो वैल्यूज है एज ए टेक्स्ट आपको अलर्ट बॉक्स में शो करनी है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. दिस इज JavaScript followed by 30. No any extra space included in it because in JavaScript the alert function does the typecasting and converts the integer value to string. Okay, after that is concatenates both the string and shows the result as a concatenated string. Okay, JavaScript it's already string value and int value is equal to 30. 30 को भी alert function क्या करेगा, string में typecast कर देगा. So in this way जो आपका output produce होगा इस input का वो होगा JavaScript followed by 30. Okay, so JavaScript 30 would be the correct answer here. Next question, among the following which one is ternary operator in JavaScript? Here correct answer is question mark followed by colon. Okay, this is a ternary operator in JavaScript. JavaScript supports one ternary operator, the conditional operator,
This is question mark followed by colon, which combines three expressions into a single expression. If else case can be replaced by the conditional operator. Okay. Here correct answer is option D. This is question mark followed by colon. Next question. What are the three important manipulations done in a for loop on a loop variable in JavaScript? Here correct answer is option D, the initialization, then the test case, then the update. Okay. नॉर्मल सी लैंग्वेज में भी आप जानते हैं आप किस तरह से फॉर लूप डिफाइन करते हैं. जस्ट सबसे पहले आप फॉर मेंशन करते हैं, देन आप इनिशियलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी i इज इक्वल टू 1. ओके, देन आप क्या करते हैं, इस तरह से सेमी कॉलम लगाते हैं. देन क्या करते हैं, टेस्ट केसेस. आपकी जो i की वैल्यू है ये किस तरह टेस्ट होगी. ओके, मीन्स i इज ग्रेटर देन 10 एंड देन क्या करते हैं आप, अपडेट. जो पर्टिकुलर आपकी i की वैल्यू है सेकंड टर्म में जब आप फॉर लूप को कॉल करेंगे तो कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होंगी, क्या अपडेशन होंगी इसमें. फॉर एग्जांपल i प्लस प्लस. ओके, सो दिस इज बेसिक सिंटैक्स फॉर लूप. ये आप सी में भी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर i इज इक्वल टू 1 देन i इज ग्रेटर देन 10 देन i प्लस प्लस. ओके, सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, in a for loop firstly the initialization. For example I is equal to 1. okay, then the test, maybe I is greater than 10. ये आपके अकॉर्डिंग है, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल यहाँ I is greater than 10 मेंशन किया है. then I plus plus. okay, and the update are the three crucial manipulation of a loop variable, and here variable is I. okay, firstly the loop initializes the variable, then test the condition, and then after executing the statement increments its value. Okay, so here correct answer is option B, the initialization, the test, and then update. Next question. What does JavaScript use instead of double equal to and not equal to? Okay, so in this case of JavaScript, option B is correct. It uses 3 times equal to sign and just not sign. exclamatory sign को not sign हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कंसिडर करते हैं, followed by 2 times equal to sign. Okay, the subset doesn't include the comma operator, the bitwise operators or the increment and decrement operators. It also disallows double equal to and not equal to because of the type conversion they perform, requiring use of 3 times equal to and not equals followed by 2 equals instead of them. Next question. What would appear at the very end of your JavaScript? For example, the in the angular bracket JavaScript language is equal to JavaScript tag. Okay, so in this question correct answer is option B, script tag. Script tag and script tag, यहाँ पर close script tag should appear at the very end of your JavaScript code. Okay, the script element either contains scripting statements or it points to an external script file through the src attribute. Okay, यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड को आप अपनी किसी भी HTML कोड में ऐड करते हैं तो आप किस तरह करते हैं, या तो आप इस तरह ऐड करते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट कोड आप देते हैं, या फिर आप src एट्रीब्यूट की हेल्प से अपना जावा फाइल ऐड करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, एंड लास्ट में वेरी एंड में जब आपका प्रोग्राम आप सारा कोड कंप्लीट मेंशन कर देते हैं जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद आप स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हैं. ओके, इस तरह से. आई होप आर यू गेटिंग मी. इस तरह से आप स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हैं एंड देन आपका स्क्रिप्टिंग फाइल कंप्लीट होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द कीवर्ड्स बिलो which one is not a statement? Option A if, option B with,
option C debugger, and option D use strict. Here correct answer is option D use strict. Strict is a directive introduced in ECMA script 5. Directives are not statements because it doesn't include any language keywords. Also, it can appear only at the start of a script or at the start of a function body before any real statement has appeared. Okay, so among the keywords below, use strict is not a statement. Option D is correct here. Next question. How do we define the term thread? Correct answer is option C, controlled execution of applications. JavaScript is single-threaded language. To clarify better, this means that one single thread handles the event loop. For older browsers, the whole browser shares one single thread between all the tabs. Okay, so how do we define the term thread? We define the term thread, it's very simple, controlled execution of applications. Okay, next question. Which symbol is used for comments in JavaScript? Very pretty simple question. Correct answer is option B, /. Single line comments start with // and any text between / and the end of the line will be ignored by JavaScript. Okay, so comments आप किस तरह मेंशन कर सकते हैं JavaScript में? //. Next question. Which of them is not the looping structure in JavaScript? Guys, ये क्वेश्चन काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है. आंसर वेरी सिंपल है. ऑप्शन सी फोर बिच. ओके, फोर बिच नाम का लूप किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता है. मेनली जो लूप होते हैं वो होते हैं for while and to while. Okay, so for which is not the looping structure in JavaScript and in any other languages. Option C is correct. Next question. What is the definition of an undefined value in JavaScript? Option A, variable used in the code doesn't exist. अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल अपने JavaScript कोड में यूज किया है जो आपने कोड में इनिशियलाइज ही नहीं किया है, it means this is the definition of an undefined value in JavaScript. Option A is correct. Option B, variable is not assigned to any value. आपने वेरिएबल असाइन किया है बट उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है एंड नेक्स्ट में आपने वैल्यू के लिए कुछ कोड मेंशन किया है, तो वहां पर भी क्या कंडीशन अराइज होगी? Means this is an undefined value in JavaScript. Okay, so option B is also correct. Option C, property doesn't exist. Okay, so focus on this point. Maybe आपने value भी define की है, code भी define किया है, data type भी define किया है, but जो आपने define किया है value and data type, वहां पर आपकी value और data type में जो properties हैं वो match नहीं कर रही हैं. ओके, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. इट मीन्स यहाँ पर भी जो आपकी कंडीशन अराइज होगी वो होगी एन अनडिफाइंड वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट. ओके, सो इन दिस वे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्सेस अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट? ऑप्शन ए अलर्ट, ऑप्शन बी प्रॉम्प्ट, ऑप्शन सी कंफर्म, and option D, all of the above. Correct answer is option D, all of the above. Alert, prompt and confirm. They all are the types of pop-up boxes available in JavaScript language. Okay, so in this way correct answer is option D, all of the above. Next question. What is the disadvantages of using inner HTML in JavaScript? If you use inner HTML in JavaScript, the disadvantages are, first one, content is replaced everywhere. Okay, inner HTML अगर आप यूज करते हैं तो जो पर्टिकुलर कंटेंट आपको एक जगह ही रिप्लेस करना है वो आपके कंप्लीट JavaScript कोड में रिप्लेस हो जाता है. Okay, this is first disadvantage. Second one, we cannot use like appending to inner HTML. इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते. Next one, even if you use plus is equal to like,
plus is equal to like inner HTML is equal to inner HTML plus HTML, still the old content is replaced by HTML, and the entire inner HTML content is reparsed and built into elements. Therefore, it's much slower. Okay, and other disadvantages is the inner HTML doesn't provide validation, and therefore we can potentially insert valid and broken HTML in the document and break it. Okay, next question. What are the two basic groups of data types in JavaScript? So correct answer is option C, all of the above. Primitive and reference type, they both are the two basic groups of data types in JavaScript language. Okay, primitive types are numbered and Boolean data types. At the other hand, reference types are more complex type like strings and dates. Okay. Next question. Which of the following are the errors in JavaScript? Option A, load time errors. Option B, runtime errors. Option C, logical errors. And option D, all of the above. Here, correct answer is option D, all of the above. In JavaScript code, here, correct answer is option D, all of the above. In JavaScript code, maybe load time errors arises, maybe runtime errors arises, and maybe logical errors arises. Okay. So what is load time errors? Load time errors are perhaps the most common and are generally caused by problems in syntax. जो आपके syntax error होते हैं, जो भी आप syntax type करते हैं as a JavaScript code, syntax error को हम include करते हैं load time errors में. Okay. Next one, runtime error. What is runtime errors? A runtime error is a program error that occurs while the program is running. For example, divide by 0 error is a runtime error. Okay. Next one, logical errors. A logical error is a mistake in a program's source code that result in incorrect or unexpected behavior. Okay. Guys, लॉजिकल एरर का सिंपल सा फंडा ये है, कभी कभी आप प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाता है अच्छे से, बट उसका जो आउटपुट होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है. मींस आउटपुट रॉन्ग प्रोड्यूस होता है आपके कोड का. आपका कोड वर्क तो करता है बट आउटपुट गलत प्रोड्यूस करता है. तो वहां पर आपके किस टाइप के एरर होते हैं? लॉजिकल एरर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स इन जावास्क्रिप्ट? Option A is correct here. First class functions. First class functions is the functional components in JavaScript. Okay. The different functional component in JavaScript are first one, first class function, and second one, nested functions. Okay. Here in this question, correct answer is option A, first class functions. Next question. Which of the following is not the properties of screen objects in JavaScript? In this question, correct answer is option B, colors depth. Colors depth is not the properties of screen object in JavaScript. Don't be confused in color depth and colors depth. Okay, because they both are different things in JavaScript. And in JavaScript languages, screen objects are used to read the information from the client's screen. And the properties of screen objects are first one, avail height, second one, avail width, third one, color depth, not to be colors depth. Okay. Fourth one, width, and fifth one, height. Okay. They all are the properties of screen object. And colors depth is not included in it. That's why correct answer is option B, colors depth is not the properties of a screen object in JavaScript. Next question. JavaScript string using double quotes is exactly the same as a string using single quote. This statement is true or false? This statement is true. JavaScript string using double quotes is exactly the same as a string using single quotes. Next question. Find output of the below code. Very important question guys. ध्यान से देखिएगा. Mention है where a is equal to 20 in first line. Second line में mention है where v
वेरिएबल यहाँ पर असाइन किया गया है नेम इज बी एंड देन असाइन किया गया है where v is equal to a. फोकस ऑन दैट. देन इज इक्वल टू 30. यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट लाइन में a की वैल्यू 20 असाइन की गई है, बट सेकेंड लाइन में b की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दिया गया है a से एंड a इज इक्वल टू अपडेट किया गया है 30. सो ओवरऑल जो यहाँ पर b एंड a की जो वैल्यू कंसीडर होगी वो लास्ट अपडेट होगी, जो आपने सबसे लास्ट में अपडेट किया है. फॉर इट मीन्स a is equal to 30, yes, and v is equal to also 30. Okay, because b is equal to a and is equal to 30. It means a is equal to 30 and v is equal to 30 also. That's why correct answer is option D, 60. 30 plus 30. Okay, option D is correct here. Next question, which is divided by 0 in JavaScript, where a is equal to 10, where b is equal to 0. Here 10 is divided by 0. Document.write a divided by b. So यहाँ पर simple 10 divided by 0 का case found हो रहा है guys. So according to this question, in JavaScript language, infinity is printed. So that's why here correct answer is option C, infinity is printed in JavaScript. When you divided any integer value by 0, in this case in JavaScript, infinity is printed. Means divided by 0. Okay, so here correct answer is option C, infinity is printed. Okay guys, now let's wind up the session. See you in the next video. If you like the video, please hit the like button. If you have any doubt, kindly let me know in comment section. Make sure you subscribe to my channel for more updates. Wish you very all the best for your examination. If you want more videos from this topic, JavaScript, client-side scripting language, kindly let me know in comment section. Thanks for watching. Bye bye. Take care.